with the students, you showing, I mean, you are releasing. So I think we can stand here. Very first. Thank you so much, ma'am. I'm Sakshi from Digital Media and CMA. Thank you so much, ma'am, for launching our magazine. It's our very first issue of, and now there are some questions. There are few questions from our students. Say your name and ask quickly. She doesn't have too much time. Oh. Yeah, like please. Quick, a very warm good afternoon, ma'am. I'm Lavi Kumar, Digital Media. I have a question. It is true that the revolutionaries use the fire of their pen to bring changes in the society, but in current scenario, I think it's getting journalism itself is in fire due to the competition based on TRP and everything. So I want to know your views. Is there any expectation of an administrative officer from the journalist? Like I really hope we can bring some change in the current scenario. You're absolutely right that I think the standards of journalism they have deteriorated unfortunately, and the focus is on sensationalism and getting more views rather than the content and the quality of the content. So we, in fact, yes, everyone has observed this problem, and it's really very unfortunate that we've reached this stage. But I think it's not something that is specific to journalism. It's a problem that society as a whole is facing. So ethics, values, in whatever we do, whatever profession that we are following, there is, I feel, a general lower standards have lowered, and it's good that you have thought about it and you're discussing this. So somewhere you are thinking about it, and I hope that at least the younger generation realizes it and tries to improve it. Is there any special expectation of an administrative officer from the journalist and the journalism? In terms of, it's not, see, expectations in terms of when we talk about intangible things, about ethics and values, that's intangible. It cannot really be defined in one word or in 2 minutes. But to be fair and hear both sides of the story before reporting, that is very important. And that is, if you're asking an expectation, that is the first thing that I would say. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, ma'am. My name is Aishwarya Ranigam, student of Digital Media. Ma'am, will you give us some pearls of wisdom? A woman DM officer in Jammu and Kashmir. We are aspiring journalists, so will you give us some wisdom? About what? I mean, anything you personally feel we as youth of India and upcoming journalists should know? I think, no matter what field we are from and no matter what we do, we should always respect everyone around us, no matter what profession or whatever your gender is, whatever it is. So I think that is one thing that I always want everyone to be and everyone to remember, that at the end of the day, and I've observed this throughout, it doesn't matter how good or you can be average at your work, whatever you are, the thing is that at the end of the day you're a good person, people will remember. So that is the most important thing, no matter what your profession is. Thank you so much. Thank you. Any last question? मैम प्रत्यक्ष दुबे फ्रॉम डिजिटल मीडिया। मैम जम्मू में निवेश हो रहे हैं और बाहर से काफ़ी लोग आकर के यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, बट यहाँ के डोमेस्टिक हमारे जो उद्योगपति काफ़ी लोग यहाँ पे निवेश करने से हेजिटेट करते हैं और सिक्योरिटी रीजंस को कारण मानते हैं। तो अभी रिसेंट में हुए बदलाव के बाद तो आपको क्या लगता है कि मैम निवेश यहाँ पे कितना सुरक्षित होगा हमारे ही अपने लोगों के लिए और बाहरी लोगों के लिए भी? जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, देखिए जो आज हमारी ये सिक्योरिटी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है, वो करीब 30 साल से जो सिचुएशन हुई है आज, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। या अगर 3 साल पहले जो बदलाव हुआ है, जो धारा 370 हटाई गई है, उसका जो उसके फ़ायदे हैं वो आपको 1 साल में या 2 साल में इमीडिएटली नहीं दिख सकते। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पर सिचुएशन इम्प्रूव हुई है और आगे भी और इम्प्रूव होगी। ये सिर्फ एक बोलने वाली बात नहीं है या एक दिन का वो नहीं है कि एक दिन हमने आर्टिकल 370
हटा दिया तो सिचुएशन एक दिन में ठीक हो जाती है, समय लगता है। और जब एक्सपोजर जैसे बढ़ रहा है, जो यहाँ के लोग बाहर आ रहे हैं, जैसे आप सब भी यहाँ पे अब हैं, तो जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है, लोकल सिटीजन्स हैं, वो जब बाहर वाले लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उससे यहाँ जो है एक थॉट प्रोसेस, जो सोच है, जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस है, वो आएगी धीरे धीरे। तो सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, इट विल इम्प्रूव। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा था कि हम सब देश के मैम कोने कोने से आए हुए लोग हैं, अगर हमें जम्मू को रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो कि जम्मू की खूबसूरती क्या है, बीइंग कमिश्नर आप यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका, आप इस चीज़ को कैसे हम इसको शो कर सकते हैं कि हम इसको प्रमोट कर सकें यहाँ पे टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट्स को, अगर हम यहाँ पे प्रमोशन करना चाहें या फिर अगर मतलब इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना और खूबसूरती, मतलब टूरिज्म, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट तो अभी यहाँ का मार्केट बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। तो अगर पूरे हम एक ग्लोबल उस पर भी इकोनॉमिक्स अगर देखते हैं, तो जो कंट्रीज़ डेवलपिंग है, जहाँ पे अभी स्कोप है, वहाँ ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जाने को प्रेफर कर रहे हैं। तो सिमिलरली जम्मू कश्मीर में अभी स्कोप बहुत है, बिकॉज अनटैप्ड पोटेंशियल है। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा प्लस है कि अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, और यहाँ जो लोगों की इनकम लेवल है वो कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी गुड मार्केट एंड इट्स एन अपकमिंग मार्केट। जहाँ पे टूरिज्म का सवाल है, सीनिक ब्यूटी जो है कश्मीर का, तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीनिक ब्यूटी है, बट जम्मू में भी कई एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रिलीजियस टूरिज्म है। तो अगेन इट डिपेंड्स किसका किस तरफ वो श्रद्धा है। तो रिलीजियस टूरिज्म है, फिर बहुत नई चीज़ें आ रही हैं, बॉर्डर जैसे चित्तौड़गढ़ बॉर्डर पे रिट्रीट होता है, अखनूर फोर्ट है, मुबारक मंडी है। सो इट हैज़ अ वेरी गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये एक चीज़ है जो जम्मू के बारे में है, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो इसको एक थोड़ा शोकेस करना चाहिए। Can we request you to please visit our campus someday? We would love to have a lecture with you now. I'll come. मैम LSR से मैम एक क्वेश्चन मेरा था, LSR से आप यहाँ आए, what change you face Changed what? in personal life and in professional life? What has changed? Yeah, what do you feel change? क्योंकि जम्मू एक जब आप आई होंगे यहाँ 13 बैच में, there are different things, but now you are living in Delhi. Everything changes. Actually, college में जो हम होते हैं, when we see the real world, everything changes. So everything changes, but I will say कि change for the positive, क्योंकि जब आपके experiences ज़्यादा होते हैं, I think you grow and evolve as a person. तो आप empathy, understanding वो सब बढ़ जाता है जब आप और दुनिया देखते हैं. So that is what has changed. Thank you. Thank you so much. Thank you. मैम आप कैंपस, I'll try. आप यदि कैंपस आएंगे तो मैं We will. Other students of other courses will also get an opportunity. Okay.